knowledge of Python, data science, MySQL, deep learning, statistic, and Power BI, and base data science and machine learning objects, right? So why data science? If you are going to uh, give this question mark to yourself or ask yourself why we are moving or why every giant company is moving towards these recent trends technology, right? Okay, so my screen is visible, my PPT. Yes, sir. All right. So solutions for these giant companies have come up with the replications of human being. जो भी let's start with the Amazon. So Amazon एक बहुत giant company है. सारे employees, सारे manpower, सारे co-workers are working together day and night 24/7. They are dealing with several kind of projects and it's a really tedious task to serve their customers. उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो डिलीवरिंग के प्रोजेक्ट हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसको टाइमली डिलीवर करें. Now they are seeking these unmanned aerial vehicle to deliver their products at their doorstep. तो पॉसिबल है आने वाले टाइम में आपके पास में जो डिलीवर हो वो प्रोडक्ट कोई एक बॉय डिलीवरी बॉय लेकर नहीं आए बल्कि एक रोबोट्स और एक आपका ड्रोन जो है आपके डिलीवर पे ले आए. नाउ इट्स अ फाइंडिंग दी path using AI and removing those obstacles. Not only Amazon, we have Google, LinkedIn, Zillow, Glassdoor, Pandora, Netflix. These farm company or mang companies are also using these specific aspects, right? So as far as social media is concerned, most of us might be using this Netflix or might have seen earlier. They are using this data science for your personalized behavior, right? For your quality experience, for your streaming experience, फॉर आपका पर्सनल कंटेंट क्रिएट करने के लिए वो यूज़ करते हैं. अगर किसी को तमिल मूवीज, इफ दे आर fond of Tamil movies, so obviously in the next term, so obviously it will suggest comedy movies in your cup of tea, right? Now, where is these data science and machine learning? Everywhere, every time round the clock, we are using these terms. You can see this is this is means no uh, driver is there, driverless vehicle. We are using several cameras around the vehicle and we have more than 8 cameras and they are navigating or passing through the obstacles, speed of the upcoming vehicle, speed of the post rear vehicle those is coming out, and then what kind of speed should be there, green, red light. So these legacy system might be an issue, right? And the communication between the traffic police and the speed of the vehicle is also very important. When we talk about war area, so yes, we are also working on that. I mean, looking at this frame, you will have to realize that data science or machine learning केवल computer science के लोगों का domain नहीं है. You might have background of biology. Doctors are also using this technology. Civil के जो candidates हैं वो आज की डेट में AI का यूज कर रहे हैं. In operation theaters, we are using in medicines, in product based companies, in delivering the products, and in social media network, e-commerce. Everywhere we are using this recent trends. अभी यूक्रेन में और रशिया में एक वॉर हुआ, उसके बेस पे several soldiers died over the borders. We could have saved if these robots are fighting instead of these live candidates, right? So this is the really issue that we have come up and solving real world problems, right? Why we are studying data science, why we are dealing with why companies are having so much. Now you have idea कि हर जगह एक कस्टमाइजेशन का फील्ड है. कस्टमाइजेशन मतलब
कि आपके बेस पे आपका प्रोडक्ट डिलीवर करना है और आपके टाइमिंग्स पे डिलीवर करना है। आपने 1 mg से कोई प्रोडक्ट डिलीवर किया है, अभी वो आपका जो सेट है वो दूसरे के सेट मेडिसिन का नहीं है, राइट। आपने अमेजोन से कोई मेडिसिन ऑर्डर किया है या कोई गिफ्ट और पैकेट्स किया है, तो आपकी चॉइस दूसरे की चॉइस से मेल नहीं कर रही है। दिस इज कॉल्ड कस्टमाइज द चॉइस। व्हाट्स योर कप ऑफ टी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अब कंपनी चाहे मेडिकल बैकग्राउंड से है, कंपनी चाहे सेल्स से है, कंपनी चाहे प्रोडक्शन बेस है, कंपनी चाहे डॉक्टर्स की ग्रुप है, चाहे वो नर्सेस का है, चाहे वो पॉलिटेक्निक का है, मैकेनिकल का है, सिविल का है, दे ऑल आर डिमांडिंग डेटा साइंटिस्ट इन अपकमिंग टाइम। दिस इज द रीजन इनका जो सैलरी पैकेज है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, योर क्वालिटी ऑफ नॉलेज, आपकी टेक्नोलॉजी कितनी आती है, आपको सिक्वल आता है नहीं आता है, पाइथन आता है, पावर बीआई आता है, टैबलो आता है, माइक्रोसॉफ्ट के कौन कौन से सर्टिफिकेशंस आपने क्लियर किए हुए हैं, क्लाउड का नॉलेज है, अगेन क्लाउड में डब्ल्यूएस है, जीसीपी है, जियोर है। It depends upon these certification and knowledge, your salary will be 100% hike in upcoming year. And of course, we are gathered here for the Python. So these capstone projects like data science and machine learning projects are headed over Python, which is freely available everywhere. Software is freely available, कोड्स इज अवेलेबल एवरीवेयर। कोई कंपनी अभी कोड अपने छुपाता नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल, उनका स्कीमा हर साइट पे मिला हुआ है। दे जस्ट ब्रॉडकास्ट द स्कीमा एवरीवेयर, but you can see it's not very old language. It's just 1991, right? Or Monty Python, right? Useful for scripting, and it's again object oriented language. We will see how we are dealing with these. So these guys are developing these sites, right? And we are dealing with small to medium sized projects, and giant companies are also using this language. Python का जो यूज है वो ना केवल बेसिक टीचिंग के लिए या प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के लिए किया गया है, बट नासा हैज आल्सो यूज्ड दिस लैंग्वेज। यू विल बी सरप्राइज्ड। यूट्यूब हैड डिप्लॉयड दिस लैंग्वेज इन देयर डेवलपमेंट। Civilization company, Lucasfilm company, Lucasfilm Limited, BitTorrent, these giant veteran candidates have also used this Python language as a developer to develop their softwares, right? Now go back to the installation Python. If we do have any query, I would like to hear from the audience. Do we have any question, any query till here? No. All right, No. No. and we are good to go. No, sir, no. Okay, we are good to go. I'm going to share my screen. So as far as installation of Python is concerned, we are having different roles and different options here. And if you have any query, you can ping me up anytime and I'll be happy to give you a query. So I'm going to search Python in Google. So Python download, right? I'm going to find the official website of this language. Here is the python.org organization, and it's freely available to download. So 3.11.4 for Windows. If you will come back to the same website and look at the another version, so you will find 4 point something का version available होगा या 5 point something का available हो सकता है if you will come back after 1 year. So day by day they are updating their packages, their modules, hence they are changing their versions itself. Now we have documentations also, and it's a really boring task to read these documents. I'm not going to read this, but you can download over here. If you have Mac operating system, you can download from this link. If you have Linux at your as a local machine, local compiler, you can go for this resource release, right? So
Once you will download, it will be exe file and will have your will install in your local machine operating system, and you will start to run the code. Right now, another option. This is the number one. I'm going to Google again and going to search Anaconda, and Anaconda is again world's most popular data science platform, which is again freely available. As I said, we have everything freely distribution install, thousand of most fundamental packages is already there, and these two options are offline version. So what do I mean by offline? Name itself suggesting we do not require internet connection, but हम ऐसा भी solution देखेंगे, ऐसा भी option देखेंगे where we are having online options. Those are having pros and cons of it respectively, but we will go for the third options. So I'm going to Google again third time, going to search this collab space research Google, or you just search on collab. It's a wonderful keyword. So you can go for collab.google. The site name is collab.google, and it will use your Gmail credentials. You can see I had already provided my Gmail credentials here. So it's already using that credentials, right? If you have not logged in, you will have to log in Gmail or Google first, then you will find this option there. I'm going to click in new notebook, and this option, this third option is the online option. So what do I mean by online option? The name itself saying you require internet connectivity in order to run your code. Here is the portal for my collab. So what collab is actually, when you go for the services of Google, you find, you already know YouTube is there. You know Gmail is serving for last decade, 2 to 3 decades. We have Drive, we have Photos, Meet. We are having this meeting right now. Chrome, everything is there. Google Earth, we all know we are used to play at the in the toddler's time. Then we have slides. Similarly, these the data science platform is evolved at this collab.search. This is again services given by Google itself, right? I can go for directly. This is the code for my code. So I'm going to written right. Let's say this is the first command, Sachin, and I'm going to print that command, and directly it will go for the output. But make sure I'm having internet connectivity to print this output, because it's connecting that server every time. Can I rename it? Yes, I can rename it, of course. So this is session 1. I'm going to session 1. And what's py.1b? It's a internet information. Py stands for Python, NB stands for notebook. And you can see at below, it's a green tick means I had successfully executed this command, which is printing my name, and below is the output. If you want to add more code, just click here plus code. It will insert code cell below, and you can see find the another code below. And I'll write a is equal to, let's say, 15. It's kind of variable where I am going to print this variable value. I'm having this print a. You see 15 is just printed out. Now, going back to the PPT, here you can see the Python interpreter, which is the line by line. So what is the line by line and the entire script? Okay. Compiler seeks first command and execute and throw the output on the screen. Compiler sees the second output and throw the output now, and then we find the line by line output. Okay, so do we have any comment? Okay, no. Yeah, Yes. Sachin, Saurabh this side. Yes. Sachin, I want to know what is compiler. Okay. So compiler is communication between computer and the human being. All right. So whatever is written inside the Python, it's not recognized by computer actually. Okay. कंप्यूटर को नहीं पता है कि ये जो प्रिंट सचिन है इसके बेस पे इसको क्या करना है.
So what it does, it just convert into the binary format. So who is converted actually? The compiler is converting. It's the Right. role and responsibility of the compiler who is converting this statement into the binary string 010101, क्योंकि आपको Mhm. पता है कंप्यूटर केवल Yes. Right. जीरो Correct. Mm. वन के फॉर्मेट को ही समझता है, उसके पैटर्न को समझता है। Binary एवरीथिंग, language. Yeah. हाँ, बाइनरी लैंग्वेज, चाहे वो सी में हो, चाहे सी प्लस प्लस में हो, चाहे जावा में हो, चाहे वेब स्क्रिप्टिंग में हो, चाहे एंड्रॉयड ऐप में हो, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड बिहाइंड द कर्टेन 0101। ये सेम ऐसा ही है जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो और आपको पूरी दुनिया से, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आपको वेब सर्चेस निकल के स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। So how many seconds it requires? You can see at the screen at the first level. Can you see Mhm. 0.44 second, right? Mm. Right. How many results do I have? I'm having millions results in 0.44 seconds. The same we are doing, एक सिंगल स्टेटमेंट को इसने बाइनरी में कन्वर्ट किया और वहां से वापस से उस आउटपुट को मेरे readable format में, it's readable, like every Mhm. language is readable by human being, which is not readable by computer or operating system. So who is converting this? Compiler. Compiler. Really Okay. appreciable solution, right? So we have come up this solution with the conversion who is establishing dialogue between the operating system and human being. अगर मैं आपको यहाँ पर अगर लिख दूंगा यहाँ पर 001111110000111, राइट, फिर मैंने कुछ स्पेस दे दिया, नाउ 1100, तो आप बोलोगे सर आप पागल हो गए हो क्या, व्हाट आर यू राइटिंग, आई एम नॉट गेटिंग इट सेल्फ, है ना। फिर मैंने बोला 1100, मैंने कहा भाई ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। बोले सर आपके लिए हो गया, आप समझ सकते हो, बट हम नहीं समझ सकते। Mm. Now in this situation compiler came into the picture, right, came into the role, right। उसने क्या Right. किया, उसने हमें एक प्रिंट का कमांड दिया। नाउ यू अंडरस्टैंड प्रिंट, राइट, यू कैन कोरिलेट विद प्रिंट। अगर मैं आपको नहीं भी Mm. बताऊंगा तो यू कैन कोरिलेट कि ये प्रिंट क्या करेगा। ये प्रिंट मुझे डेटा साइंस का स्टेटमेंट या जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा उसका आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। Mm. Yeah, as simple as that. Right. Correct. Now, in the same way, every language, either Java, C, .NET, they have derived this the same way. They have driven the same. They have adopted the same pattern, right? Right. कुछ लैंग्वेज अब कम टफ होती हैं, कुछ इजी होती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इजी और हार्ड लैंग्वेज, राइट। वी हैव सो मेनी वर्जन्स इन पाइथन, वी हैव अदर प्लेटफॉर्म्स टू रन पाइथन कोड, यू कैन सी एनाकोंडा, मींस देयर आर इनफाइनाइट। मैंने आपको सिर्फ 3 बताए हैं। फर्स्ट इज पाइथन ऑफिशियल वेबसाइट, सेकंड वन इज द एनाकोंडा, एंड लेट मी ओपन माय एनाकोंडा आल्सो, Anaconda Navigator, and you can see here. And third one is the collab. But actually, there are countless, infinite. We have W3 schools. Like if you go to the Google and find online compiler, online Python compiler, you will find infinite searches. Right? We have programming, we have GDB online, right? Tutorials point, we have online W3 schools, और ये सब आपको प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है राउंड द क्लॉक 24/7। आप प्रिंट हेलो लिखो, रन करो, एट द शेल पॉइंट यू विल फाइंड द आउटपुट देयर। कोई भी आप कंपाइलर उठा, बट ड्रॉबैक इज, एज आई सेड, एवरीथिंग इज हैविंग प्रोज एंड कॉन्स। इसके ड्रॉबैक क्या है, जो आपने काम किया है उसको आप सेव नहीं कर सकते, यू वोंट फाइल दैट फाइल। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर आप आईटी कंपनी में आप रिक्रूट हुए हो और सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह एक प्रोजेक्ट्स पे 2 मंथ्स 1 मंथ्स काम कर रहे हो, तो आपको एक स्टैटिक प्लेटफॉर्म चाहिए। स्टैटिक प्लेटफॉर्म मतलब एक कोड को आप एक दिन में नहीं लिख सकते। आप उसको आज थोड़ा लिखोगे, फिर थोड़ा कल लिखोगे, फिर थोड़ा परसों, एंड देन यू विल डेवलप दी 1000 पीस ऑफ कोड इन
1 week or 15 days or 25 days. So you will add one more thing, and what we will do for this, we had static background such as anaconda. So I'm going to have this platform. So इतना सारा जो ऑपरेशन है उससे डरने की जरूरत नहीं है. इसमें सिर्फ हमें जुपिटर नोटबुक पे फोकस करना है, विच इज अगेन वेब बेस्ड इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग एंड ऑफलाइन वर्जन. मार्क योर माई वर्ड, इट्स ऑफलाइन सोल्यूशन. आपका इंटरनेट कनेक्शन लूज भी हो जाता है तो भी आपको कोड मिलेगा. यू विल फाइंड योर सेव्ड कोड देयर इन योर लोकल मशीन, राइट. अब आपका लैपटॉप ही पूरा पानी में चला गया तब तो उस केस में कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन आपको हार्डवेयर और मेमोरी के एस्पेक्ट से आपका कोड नेक्स्ट डे वहीं से सेव आपको मिलेगा. इट्स एज सिंपल एज योर वर्ड फाइल, योर एक्सेल शीट, योर गूगल पीपीटी, एवरीथिंग. So I'm going to rename it again one more time. I'm having session 1. So this is the, okay, so let me session 1 for coding. I'm going to convert it to the coding part, right? Okay, so any other question do we have? So is it like Google Sheet, Satinji? Like today we are today I am working in a, I'm doing some writing some codes. So tomorrow if I'll open the same like where I stopped, like I can start it from there itself. Yes. Okay. And you don't need to save it because can you see unsaved changes after each 5 seconds ये ऑटोमेटिकली उस कोड को सेव करता है. आपको सेव Right. करने की जरूरत भी नहीं है. दो इट्स ऑफलाइन वर्जन, तब पर भी आपको इसने एक इनबिल्ट फंक्शन दिया. आई एम गोइंग टू क्लोज ऑल द कोलैब्स एंड एवरीथिंग. कोलैब भी जो है एक ऑनलाइन वर्जन है. तो कोलैब की जो फाइल है, these are, you will find all these your collab file in the गूगल ड्राइव. आपके ड्राइव में जाके सेव होंगी, ठीक है. लेकिन जो कोडिंग की, यहाँ पर कोडिंग की जो फाइल है ये आपके लोकल मशीन पे सी ड्राइव में जाके सेव होगी, वेयर यू हैव इंस्टॉल योर एनाकोंडा मशीन. आई विल गो टू द local machine, go to the C drive, go to the program files, and do I have Anaconda here? No. Program files, do I have Anaconda? Go for users, Sachin. Yes, Anaconda 3 Anaconda. having these files, right? If I scroll down, I'll find all these IPY scripts, right? So you will find all these scripts over here, right? So you can copy this script for your for the person. आपको अगर assignment आपको share करना है, आपकी प्रोफेसर को आपको फाइल देनी है जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, already available in your local machine, you can attach this file and send to your professor. वो वहाँ पर अपनी जो लोकल एनाकोंडा होगा या पाइथन होगा उस पे वो फाइल रन करा के देखेंगे, उनको पूरा जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे दिख जाएगा. This is the entire history, and because it's using my local host, you can see if you are aware about web development, web के साथ में आप अगर थोड़ा सा आपने देखा हो बैकग्राउंड, तो लोकल होस्ट पे ये सारा काम कर रहा है, right? Now I am going to write again print, and this is coding session. I'm going to run this code again. You can see this code is. Now, one more thing. Python is case sensitive. So what do I mean by case sensitive? अगर मैंने इस कोड को कुछ होशियारी करने की कोशिश करी और मैंने p को कैप्स प्लग p के साथ में किया, I'm going to run this code. You can see name print is not defined. It's showing, it's a throw an error on the screen. You cannot play or you cannot change even a single word. We will see even space are if space are I mean a big task or big issue here, right? A dot is also a big issue, right? You'll have to give the same case. Upper case है तो upper case, lower case है तो lower case, right? If you're giving another dot here, let me run this code. Can you see again invalid syntax? It's not expecting even a single dot in my code. जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा. We require print
we require round brackets. This is called round bracket. Then I'll call it quotes. यहाँ पे इनको quotes कहते हैं. और फिर आपका जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो इसके कोड्स के अंदर रहेगा, राइट? कोड्स, लेट मी ड्रॉ दिस कोड्स अगेन. यस. So if I'm going to assign this code and writing something inside the code, and let's say I'm going to assign using t, this is the variable, or I would say container. Inside this container I had stored my name, which is Sachin. Now I want to display over the screen. जैसे आप कंप्यूटर की लैब में या कंप्यूटर के ऐप में कोई भी गेम खेलते हो और उस गेम पे आपका नाम होता है आपको वो प्ले करने से पहले. So we are going to play this Sachin, and here we are having this print statement. Right? Now we have print t, and then we have this statement. Now I'm going to print the another statement. Let's say I'm having home, and then having, let's say, r is equal to 52.6, some float values. Let me print r here. Can you see? It's just printing r value, which is just the float value, right? Now I'm going to print some or another values, right? Suppose I'm having this r. Suppose instead of r, I'm having some k variable, random variable name, and instead of float values, I'm going to take, let's say, whole number 78, and printing this k. And this code now 78. Okay. I want to check the data type of this one. So what I'll do, I'll write type, and build this type, I'll write t. You see, with this string, it's showing the data type of this string. It's str, means string. We have r, instead of r, we have type of this r. We have r values, and we have this r as a float. This is a type of my variable. Now let me check this type of this k. I'm having type of k is integer. Here I'm having integer variable. It's, the type of k is integer. The same function will work for other variable also. We will have another dimension, and you can cross check this value, right? What will happen? Sachinji, Yes. sorry to interrupt. No issue. I'm not sorry. I'm not able to understand what is this like I'm typing K, then why it is I what is this int float and what are this like and what, Int stands for integer. Integer is what? Integer represents to whole number, yeah, not decimal itself, right? जब कभी भी आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करते हैं, जब कभी भी आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करते हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करते हैं, आधार कार्ड नंबर की बात करते हैं, फोन नंबर की बात करते हैं, यू हैव होल नंबर. You do not have fraction in that case. Such kind of operations are called integer. Float means 52.6. जब आप किसी एज की बात करते हैं, जब आप किसी की सैलरी की बात करते हैं, जब okay, आप किसी की हाइट के बात करते हैं, जब आप numbers. किसी की नंबर्स कॉन्टिन्यूस, किसी के शू के साइज के बारे में बात करते हैं, राइट? Mm-hmm, जब आप mm-hmm, किसी की लाइक जैसे कि वेद टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, राइट? जब आप right, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, राइट? जब आप टाइम की बात करते हैं, ये सारे होते हैं डेसिमल में, float फ्रैक्शंस में, fractions. राइट? तो Right. दोनों ही टाइप का डेटा सेट हमारे वर्ल्ड में प्रैक्टिकल लाइफ में अवेलेबल होता है. पॉपुलेशन मिलियन है, बिलियन है, Mm, इंडिया की ले लीजिए चाहे चाइना की, लेकिन कभी भी वो फ्लोट में नहीं हो सकती. करेक्ट? okay. कभी भी वो फ्लोट में नहीं होगी, नेवर, राइट? Mm-hmm. नंबर ऑफ स्टार्स, आपने बोला सर वी कैन नॉट काउंट द स्टार्स, बट Oh, कैन यू गिव द आंसर इन यस और नो? क्या ये फ्लोट में होगा या इंटीजर में होगा? नहीं, ऑलवेज इंटीजर में होगा, है ना? integer में, हाँ integer में. This is the universal truth. Do you Super. agree? Similarly, Okay. number of planets in universe, of course you will, sir, planets कभी भी fraction में नहीं हो सकते, right? So Right.
we have both kind of identities, right? अब बात आते हैं हाइट्स की. तो हाइट किसी का होल नंबर तो हो सकता है, लेकिन उसका एक 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 प्रोबेबिलिटी है. मतलब ज्यादातर हाइट्स लोगों की 5 फीट नहीं होती है. आपको पता है वो 5.2, 5.3, 5.1, 5.6 ऐसा होती है. तो being a realistic parameter, we have height in a float. किसी की जीएसटी नंबर, जीएसटी का वैल्यू अगर आपने फिल करना चाहते हो, आपका बिजनेस है और उसमें जीएसटी आप फिल करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स इट विल बी इन फ्लोट. Right. आपको फ्लोट में फिल करना है, उसका फ्लोट में वैल्यू आता है. सो वी हैव फ्लोट as a big solution in a real world and integer as a real world. Now come back to the string. जब कभी भी हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसी के नाम की. किसी का फोन नंबर इंटीजर, किसी का नाम स्ट्रिंग, किसी का एड्रेस स्ट्रिंग, किसी का मान लीजिए ऑफिस का नाम स्ट्रिंग, स्कूल का नाम स्ट्रिंग, किसी का स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम स्ट्रिंग, Right. किसी का पैराग्राफ है, वो सारा का सारा एरे ऑफ कैरेक्टर है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है. सो this is entirely different from integer, entirely different from float. Now we have separate category which is called String. string. We have another character which it's called boolean. I'm coming back to the boolean, right? So what's a boolean? Boolean is called either it is true or false. Every switch जो या तो ऑन है या ऑफ है, in between on and off there is no solution, right? Right. Computer is again having 0 and 1. There is no language in between 0 and 1. We have day और night, right? इसके बीच में है, बट एक आप एक ब्रॉड कैटेगरी अगर आप बोलो तो एक ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन वहां पे भी है. ह्यूमन बीइंग आर डेड और लाइव, तो वहां पे भी एक विन विन सिचुएशन है, या तो वो जिंदा की कंडीशन में है या वो मरे की कंडीशन में है. सिमिलरली इन बूलियन एस्पेक्ट, सपोज आई एम गिविंग लेट्स से कोई भी नाम दिया मैंने, p वेरिएबल दिया और मैंने बोला ट्रू, राइट? कैन यू सी इट्स शोइंग यूजिंग green keywords. Now I am going to print p. I'll find true here. Along with this, I am also checking the type, data type. इसका data type क्या है? You will find boolean. It's not showing integer. It's not showing float. It's not showing str, which is a string. Right. But it's showing another data type, which is actually boolean, जो कि true or false के साथ है. Now, as I said, we have the case sensitive language. So यहाँ पे true है. तो ये